Very recently, I actually joined a new company. Some of you might know that for 8+ years, I have been working in the consulting industry, and very recently, I moved to the industry side of things, more specifically e-commerce. आज के वीडियो में मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट देती हूँ because it's been 2 months that I have joined this new company. Share a little bit about my learnings and more importantly, how I have been coping after moving from consulting to the industry. Hi everyone, welcome to Insider Gyaan. My name is Somi. I am an IIT Delhi and ISB Hyderabad grad and इस चैनल पे मैं अपने last 10 years के career experiences share करती हूँ. I create a lot of MBA related content. I also do educational videos on Microsoft Excel, consulting cases, etc. So if any of those things are your jam, please consider subscribing to the channel. So new job update, a lot of Instagram DMs, LinkedIn DMs have come in asking me to update about how my new role has been going ever since I sort of explained that I've quit consulting for good. तो थोड़ा सा रोल के बारे में बताऊँ तो I've joined an e-commerce company in a business development role and I will be leading a team which handles the strategy and operations of a specific function within the e-commerce company. It's a Singapore headquartered company, Southeast Asia की company है and it's an e-commerce leader. It's been in business for about 7 years now. It was formed in 2015. But anyway, इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ. Part 1 में what are some of the things that I have done as a new joiner in a new company so that it can give you guys some tip, you know, कि अगर कोई भी नया company join कर रहे हो या as a fresher you are just starting to work, what are some of the things that you can do in an organized manner to come up to speed and understand the company better. And the second part of the video I'm going to cover कि consulting से move करते हुए because I've been in consulting for 8 freaking years and consulting has been in my blood and my veins, how it has been moving into another company and what are the differences, similarities, how I've been coping, learnings, etc. So starting with what are the things I did in my first week and what I'm continuing doing in my first few weeks. Number 1 is set up a call with my reporting line manager, जो मेरा direct manager होगा. उसके साथ मैंने कॉल सेटअप किया एंड उसके साथ मोर इम्पॉर्टेंटली उस कॉल के दौरान आई ट्राई टू सेटअप अ केडेंस कि हर फ्रीक्वेंटली मैं कब मिल सकती हूँ उससे बिकॉज जनरली व्हेन यू आर जॉइनिंग अ न्यू कंपनी ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड ईदर अ बडी और योर मैनेजर और योर काउंसलर आर द पीपल हु आर गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट द थिंग्स राइट. So we agreed on a daily cadence that we will meet for 30 minutes every day. And that has been a game changer because होता यह है ना कि मैनेजर का अगर कुछ काम है तो उस 30 मिनट्स में पहली बात तो वो मुझसे शेयर कर सकता है कि दिस न्यू थिंग हैज़ कम अप एंड यू हैव टू टेक इट एंड दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट एट्सेट्रा. बट मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए throughout the day when I attend meetings or talk to people, there are these million questions in my head and I don't know the answers to those, right? So I use these 30 minutes to ask him a lot of questions, to understand more importantly what are the expectations from me inside piece of work that I'm doing. I can also update him on the things that I have done in the last 2-3 days and ऑल ऑफ दिस इज़ ग्रेट. बहुत जल्दी प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे मन में है तो वो रिजॉल्व हो जाता है एंड ऑब्वियसली सिंस आई एम न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स आई मिस अंडरस्टैंड ऑल्सो, लॉट ऑफ एक्रोनिम्स विच आई डोंट अंडरस्टैंड येट. दीज थिंग्स गेट क्लैरिफाइड वेरी क्विकली विद अ डेली केडेंस विथ माई मैनेजर एंड काइंडली माई मैनेजर अग्रीड फॉर अ डेली केडेंस क्योंकि कई लोग तो बोलते हैं वीकली कर लो एंड वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज तुम्हें पूरे वीक के लिए वेट करना है. But anyway, this is the first thing that I did. Second thing that I did was to set up some random calls or, you know, lunches with the other stakeholders who I know that I have to work with in the future. These could be people of my level, slightly junior, slightly senior, people who I am managing, people who I am not managing but who are my upward stakeholders as well. It doesn't take a lot honestly. कुछ लोगों से तो इनसे मुझे काम से रिलेटेड ही बात करना था. So I could use that to introduce myself. थोड़ा सा मतलब अपने बारे में बता देना is always good so that both of you have expectation setting कि किस background से आ रहे हो, that you are new and they don't like throw up a lot of stuff on you and back out. ऐसा नहीं होना चाहिए.
So some of these people are work related, but others who I know that I might have to interact with in future and immediate मेरा काम नहीं है, उनसे all it takes is just saying, hey, I'm new to the firm, I heard about you from someone, and I know that this is what you're doing. I would love to take some time from your schedule to introduce myself, to know what you are doing, etc. उससे होता ही है ना कि जब आप नए कंपनी में ज्वाइन करते हो तब आपके पास ऑब्वियसली कोई नेटवर्क नहीं है, एंड स्पेशली मेरे लेवल पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर ज्वाइनिंग एट अ स्लाइटली सीनियर लेवल एज वेल. यू नीड दोज people in your like boat. You need to sort of know who you are dealing with, and more importantly इन्हीं में से कुछ लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो बहुत सारे कंपनी रिलेटेड इनसाइडर टिप्स भी शेयर कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं यूजुअली पूछती हूँ कि जो मेरा अपना जो रिपोर्टिंग लाइन मैनेजर है राइट, उसके बारे में भी तो फीडबैक होनी चाहिए ना, लाइक हाउ as a person he used to work with, what kind of things he expects, and he can give me one perspective, but people who have worked with him on a different kind of a level, वो लोग एक अलग perspective share कर सकते हैं. So इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है. The third thing is asking anything, any information from people in written and reading up a lot. नाउ पहले के कुछ दिनों में आपके साथ भी ये होगा जब आप कोई भी एक न्यू कंपनी ज्वाइन करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलोगे, बहुत सारे चीज़ें डिस्कस होंगी, एंड समटाइम्स इन द मीटिंग्स देयर विल बी पीपल हु आर not senior but like they know everything in and out, but you are not up to the content, right, up to date on the content. And ऐसा भी होगा कि कई मीटिंग्स में you will feel totally lost कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि क्या डिस्कशन चल रहा है. So in any of these situations और generally जब भी कोई आपको कुछ हैंड ओवर देता है राइट, लाइक कि ये तुम्हारा काम है, ये हैंड ओवर डॉक्यूमेंट है, इन सब केसेस में ना इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू टू आस्क फॉर दैट पर्सन फॉर समथिंग इन रिटन कि these are the tasks, okay, उसने तुम्हें समझा दिया, but ask him if it's possible for him or her to write it down for you. And if it's a senior person, then what you do is during that meeting तुम खुद पता कर लो कि तुम्हारा क्या काम है, तुम उसको खुद भेज दो और बोलो कि have I got this correct, कुछ आपको ऐड करना है क्या इस पे. Now putting everything written ना, ये मेरे लिए तो बहुत हेल्प करता है because it relieves my brain space quite a bit. Like I know that whenever I have a question, I can refer back to those documents and I am not in the constant pressure of remembering unnecessary things, which is not also possible क्योंकि जब एक नया कंपनी आप ज्वाइन करोगे इतनी सारी चीज़ें होंगी कि it's easy to like forget things, it's easy for things to get jumbled up. इतने सारे आप लोगों से मिलोगे, घंटा आपको लोगों का इतने सारे लोगों का नाम याद रहेगा. So ये सारी चीज़ें अगर रिटर्न में है तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स रीडिंग अप अ लॉट बिकॉज पर्सनली जब मुझे कोई कुछ बोलता है ऑब्वियसली राइट थिंग्स डाउन, बट देन आई एक्चुअली डाइजेस्ट व्हेन आई एम रीडिंग दैट थिंग एंड sort of revising it in my own head. So that's my style, but your style could be different, but that's what I have been doing, asking for documents and reading them up whenever I have some time. The last thing that I'm doing which has been quite helpful is actually at the end of the week, फ्राइडे को बैठ के मैं लिखती हूँ कि ये हफ्ते मैंने क्या क्या किया है. सो मेरे पिलर के अंदर ऑब्वियसली से 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2 अलग डिविजन्स है जो मुझे रिपोर्ट करते हैं. सो हर एक पार्ट में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स है, ये सब अगर मैं लिख लेती हूँ ना तो एक तो वीक ऑन वीक मेरी इन्वेंट्री बिल्ड हो रही है. लाइक आई डोंट हैव टू रिमेंबर कि मैंने इस वीक क्या किया था. sort of if I have to update my manager say 6 months down the line कि तुमने क्या क्या अचीव किया है अब तक, these things can act as my notes basically to refer back to. प्लस जनरली मेरे को हेल्प करती है टू ट्रैक माई ओन प्रोग्रेस. कई बार ये होता है कि आप बहुत कुछ कर लेते हो किसी वीक में, या फिर किसी वीक में आप कुछ नहीं करते हो, तो ये सब ना आपको रियलाइज़ उस टाइम पे नहीं होता जब तक आप लिखते नहीं हो, इन सब चीज़ों को समराइज़ नहीं करते हो. सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट आई हैव बीन डूइंग. नाउ मूविंग टू पार्ट 2 विच इज़ हाउ इट हैज़ बीन मूविंग फ्रॉम कंसल्टिंग, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस एट्सेट्रा. नंबर 1 थिंग जो कि मुझे बहुत ही हार्ड हिट किया वाज द काइंड ऑफ written communication modes, like the difference in the written communication modes. कंसल्टिंग में हम सिर्फ स्लाइड्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं, इंसाइट्स डालते हैं, बट
in this company, no, we use a lot of Google documents as well. The slides are also not very well made, like इतना कोई structured slides नहीं है. And Google Docs, especially Google Docs and Word Docs use करना मुझे काफ़ी अजीब लगता है, because who has the time to read through such lengthy documents? But well, apparently that's how it is done here, which is both good and bad. Like bad because sometimes the seniors might not have time to read through such detailed documents, तो तुम क्यों ही बना रहे हो. But good also because ऐसे documents बनाने में आपको ज़्यादा time waste नहीं करना पड़ता, so you can actually focus less on admin and documentation kind of work and more on the actual work, like the actual work that will bring impact basically. But इसका बहुत बड़ा drawback ना ये हो जाता है कि things are not organized, right? You are not leaving an audit trail, which also means that things are very haphazard. If I'm joining a company, if I ask people for some written documentation to read through, it's difficult for people to share it, क्योंकि इन्होंने कभी इतना इस तरह की डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बनाया ही नहीं है. सो दिस थिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, मेरे कमेंट्स टू माई like whoever I'm managing is usually कि इसको थोड़ा structure ठीक कर दो, and these seem to be very non-value add task to these guys, right? They are focusing more on the real task. So goods and bads है, it's just I have to get used to it. Point number 2 that I noticed was quite surprising to me was that things move really fast over here. Consulting में ना क्या होता है, even the shortest project will be of maximum 2 months. एंड उस टाइम पे हम कुछ स्ट्रैटेजी बना के क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं. अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्लाइंट कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा. बट यहाँ पे थिंग्स मूव सो फास्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन हमने मीटिंग में आउटकम निकला दैट वी हैव टू रिड्यूस अ स्पेसिफिक कॉस्ट. द नेक्स्ट डे आई एम आस्किंग पीपल फॉर डेटा. द थर्ड डे someone from my team is doing the analysis. The fourth day we are presenting it to whoever is the decision maker, like the country manager or someone, and that's it. Like in that specific meeting the decision has been taken to take action 1 2 3 to reduce the cost. Execution में obviously 1 महीना और लगेगा because there might be product changes, there might be communications to customers because it's a e-commerce company, right? तुम्हें कोई भी change करने के पहले you have to inform your customers कि ये change आने वाला है वगैरह. तो execution में 1 month लगेगा, but within like 1 month and 5 days you will literally गेट टू सी द रिजल्ट. जैसे ही वो एक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे वैसे ही आपको डेटा में इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि उस मतलब कॉस्ट एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, विच इज़ सो न्यू एंड विच इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, एंड दिस इज़ द पार्ट विच आई थिंक आई एम गोइंग टू एंजॉय द मोस्ट. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की रीजन्स वाई आई वॉन्टेड टू मूव फ्रॉम कंसल्टिंग. थर्ड चेंज इज़ मूविंग फ्रॉम कंसल्टिंग. यू नो व्हेन यू मूव फ्रॉम कंसल्टिंग में तो मैनेजर लेवल या जिस भी लेवल पे हो, यूजुअली व्हेन यू मूव टू द इंडस्ट्री यू जॉइन एट अ सीनियर पोजीशन, लाइक स्लाइटली सीनियर पोजीशन, बिकॉज कंसल्टिंग में द अजम्पशन इज़ कि तुम्हारी लर्निंग कर्व जो है वो बहुत फास्ट होती है, एंड नेचुरली यू आर मेंट टू बी एट अ स्लाइटली सीनियर पोजीशन. सो आई हैव जॉइंड ओवर हियर एट अ स्लाइटली सीनियर पोजीशन एज वेल इन दिस कंपनी. बिकॉज ऑफ दैट आई रियलाइज दैट आई एम like quite mature because generally it's a very young firm, okay? बहुत ही young workforce है, तो इस चीज़ के pros and cons दोनों ही है. Like pros because you get a lot of opportunities to sort of mold people into your way. जब लोग young होते हैं उनके पास baggage कम होता है, वो तुम्हारी तरह से काम करना जल्दी सीख जाते हैं. So that is there. But the con is that like for me specifically, joining at a slightly senior position, I cannot get into the details of everything. जबकि कंसल्टिंग में मैं एट अ मैनेजर और इवन सीनियर मैनेजर लेवल पे भी मैं काफ़ी डिटेल्स में होती थी. मतलब मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि एनालिसिस डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा क्या बता रहा है हमको, एनालिसिस क्या बता रहा है. बट यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. एक तो थोड़ी सीनियर पोजीशन पे हो, देर आर ऑलरेडी पीपल हु आर मेंट टू गो इनटू दोज डिटेल्स, एंड सेकेंडली बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे को रिपोर्ट कर रहे हैं.
that becomes a little difficult to manage because as a person, I like to go into the details and understand things. So now I have to give up control a little bit on my juniors and trust them that they're doing their work. They're all very good. Like, I don't have any like capability issues or something, but just from my personal comfort aspect, I'm struggling a little bit and sort of adapting to it. And to be very honest, it is not my job to go into the details, because if I go into the details of everything, I'll be overwhelmed. I'll not be able to manage everything as well. My job is to order for an analysis to be done and understand the insights. And that's quite different from consulting, क्योंकि consulting में मैं actually like अपने टीम को बताती कि analysis कैसे करना है. मतलब the vision and the direction was mine. So over here I have less control over the things that I'm doing. Lastly, a couple of other interesting things, because consulting is a service industry. वहाँ पे clients को serve कर रहे हो, वहाँ पे हमेशा तुम formals पहन के जाते हो. But now I've practically moved to the tech industry, right? And things are quite different. I mean, firstly, there's no dress code, which was so like weird for me to fathom कि कोई ड्रेस कोड ही नहीं है. कुछ जगह पे होता है कि कैजुअल ड्रेस कोड है, पर यहाँ पे कोई ड्रेस कोड ही नहीं है. Most of the times I'm the most overdressed person in the room. People come in shorts, people come in obviously baggy jeans, beachy shirts, crop tops, and nobody cares. Like, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्रेस कोड है ही नहीं. And secondly, इतना सारा like freebies. There's a nap pod which was so which was quite interesting for me to digest, कि जब आपको नींद आ रही हो तब आप जाके नैप पॉड में लेट जाओ, थोड़ी देर रिफ्रेश हो जाओ और फिर वापस आके अपना काम कर लो. So lot of free food, free breakfast, lot of snacks, lot of different kind of drinks in the cafeteria. Dinner is free. Game rooms है. There's a huge and a very well functioning gym which you can use. So ये सारा infrastructure it's different for me to sort of get used to. Not getting used to, like, it's obviously good, it's a welcome change, although I feel like most of us don't end up using some of these like free food that you get, because at the end of the day you also focus on your health quite a bit. But it's good to see that there are options, and there's so many things to sort of make your life comfortable so that you can just focus on doing the work and get done with it. So yeah, these are my initial observations. धीरे धीरे I'm sure मेरे को और भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगे, and I'll keep sharing them if I have new realizations and learnings on this channel as well. But I hope you guys found this video engaging, helpful in some way. If you did, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. बहुत फ़र्क पड़ता है आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से. एंड दैट्स अबाउट इट. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.